बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। Assalamu alaikum everyone. I welcome you all back to my channel Society Talking. Before the start of this video, I was really feeling anxious. I still am feeling anxious. और मुझे परेशानी इस चीज़ की है कि क्या मैं वो बात आप तक पहुंचा पाऊंगा जिसके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. I'm feeling anxious that whether my audience will agree to what I'm going to say today. But इतनी परेशानी होना तो अंडरस्टैंडेबल है. आफ्टर ऑल मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं वो बात जो आप तक पहुंचानी चाहता हूँ वो आप तक उसी तरह पहुंचे जैसे मैं आप पहुंचाना चाह रहा हूँ. बिफोर वी start this video, I would like to reiterate the disclaimer once again. And I would like to remind everyone that this video solely focuses upon what stress and anxiety are in general. And this topic and this video are not gender biased. It is not a diagnosis, but general observations and my personal experiences. तो स्ट्रेस क्या है? हम तो हर रोज़ दिन में वी आर स्ट्रेसफुल, वी फील स्ट्रेस्ड. इट इज़ अ नॉर्मल everyday response to life, and it also can be motivational. हम सुबह उठते हैं तो हमें जो वो थोड़ा सा जो स्ट्रेस हो रहा होता है to leave our bed in the morning and to start our day, that's stress, but that's controlled stress. जब हमारी बॉडी एक स्ट्रेस में आती है तो हमारे अंदर बेसिकली एक फाइट एंड फ्लाइट मोड की एक स्टेटस में हम चले जाते हैं. ये एक इंस्टिंक्टिव एक नेचुरल रिएक्शन है हमारी बॉडी का, एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है जिसमें हमारा जो माइंड है वो बेसिकली हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से बचा रहा होता है. हमारे दिल की धड़कन की तेज़ हो जाना, हमारे एनर्जी लेवल्स एकदम से बढ़ जाना, हमारी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हमारे हार्ट रेट का बढ़ जाना, ये सारे एक वो अलामात हैं जो हमें स्ट्रेस में हम जनरली फील कर रहे होते हैं. अब हमारे अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स भी रिलीज़ हो रहे होते हैं. स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल के नाम से, वो रिलीज़ हो रहा होता है. हमारा एड्रेनलिन पंपिंग हो रहा होता है. हमारे अंदर जो हमारा लिवर है वो एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी में जनरेट कर रहा होता है और जिसकी वजह से हमें एकदम से एनर्जीज मिलती हैं. अब अगर यही स्टेट ऑफ हमारा जो फिज़िकल स्टेट है, अगर ये ज़्यादा देर तक रहता है, अगर तो ये हुआ हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हम इस वजह से हमारा ये ट्रिगर हुआ है, ये सिचुएशन इस सिचुएशन की वजह से ट्रिगर हुआ है. मसलन स्टूडेंट्स स्ट्रेसफुल फील करते हैं इम्तिहान से एक दिन पहले. इम्तिहान यानी उनको मुख्तलिफ़ किस्म के, किसी को नौज़िया हो रहा होता है, किसी को फॉरगेटफुलनेस हो रही होती है, किसी को अपर नेक मसल्स में पेन फील कर रहे होते हैं, कईयों को नौज़िया हो रहा होता है, कई बच्चे हमारे एजिटेटेड हो जाते हैं, कुछ इरिटेटेड हो जाते हैं, कुछ एजी हो जाते हैं, कईयों के एनर्जी लेवल्स नीचे हो जाते हैं. एवरी बॉडी बिहेव्स डिफरेंटली, बट दीज आर सम ऑफ द जनरल रिकॉर्डेड सिम्टम्स. तो ये स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं और जैसे ही वो सिचुएशन ख़त्म होती है तो बॉडी कम्स बैक टू बीइंग नॉर्मल. लेकिन अगर यही सिम्टम्स लंबी देर के लिए आप एक्सपीरियंस करते रहें, इवन व्हेन दिस सिचुएशन इज़ ओवर, लाइक इम्तिहान ख़त्म हो गए और आप बच्चे फिर भी फील कर रहे हैं, आप किसी एक ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो गए और उसकी वजह से आपकी ये सारी ट्रिगरिंग हुई, बट वो आपके सिम्टम्स वापस नहीं, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि वो एग्रीवेट हो रहे हैं. मसलन आपकी रैपिड ब्रीदिंग हो गई है, आपके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, आपके अंदर आपकी हार्ट रेट रैपिड हो गई है, आपको स्वेटिंग हो रही है, आप ट्रेम्बल करते हैं, कांपते हैं,
आप को इंसोम्निया हो रहा है, स्लीपिंग डिसेबिलिटीज़ हो रही हैं, आप नर्वस रहना शुरू हो गए हैं, आप फोकस नहीं कर सकते, और बहुत मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं, और ये बहुत लंबे ड्यूरेशन में जाके होती हैं, तो इसको हम कहते हैं एंग्जाइटी। स्ट्रेस के अंदर जो हमारा रिस्पॉन्स होता है दैट्स वेरी रैशनल, वी आर वेरी फोकस्ड, हमारा फोकस और ज़्यादा पहले से बेहतर हो जाता है। वेयर एज इन एंग्जाइटी our response becomes irrational and our ability to focus just completely shuts down, और इसको कहते हैं एंग्जाइटी। और ये ऑब्वियसली बड़े लंबी देर के लिए ये सिम्टम्स आपको ऐसे फील होते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्ट्रेस, दैट इज समथिंग वी नीड टू नो, व्हाट कॉजेज इट। सो टुडे वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट, आज हम उसके बारे में भी बात करते हैं। अमूमन आप लोगों से बात करें तो लोग कहते हैं कि जी वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या कोई एक अनसर्टनिटी है उनकी लाइफ में, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि स्पेसिफिक सिचुएशन और अनसर्टनिटी स्ट्रेस कॉज नहीं करती, तो फिर क्या करती है, वो आपको वीडियो के आगे जाके पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है जो स्ट्रेस कॉज करती है। अब मान लें कि हम जनरली लोग बात करते हैं, कहते हैं कि जी मेरी जॉब बड़ी स्ट्रेसफुल है, मेरा काम तो इतना स्ट्रेसफुल है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो उन लोगों के लिए और बाकी सब के लिए भी जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या चीज़ उनको स्ट्रेस दे रही है, लेट्स से कि दे आर एबल टू आइडेंटिफाई, उनके लिए एक सवाल है, कुछ सवालात करें अपने आप से। कुड समबडी एल्स बी हैप्पियर इन दिस सिचुएशन, मेरे अलावा कोई और सिचुएशन में खुश है? एक और इसी सवाल को एक और तरीके से करें, इज समवन आई नो हैप्पी इन दिस सिचुएशन, क्या कोई जिसको मैं जानता हूँ वो खुश है इस तरह के काम में? लेट्स से जॉब है तो उस जॉब में खुश है, उस तरह की जॉब में, और अमूमन आपको जवाब हाँ ही मिलेगा। तो जब हाँ में जवाब मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो खुश हैं और आप खुश नहीं हैं तो वो जॉब जो है वो आपके लिए स्ट्रेस का बायस नहीं बन रही, क्योंकि अगर आपके लिए स्ट्रेस का बायस बन रही होती तो वो सब भी फिर उसी स्ट्रेस में होते जिस स्ट्रेस में आप हैं। इसको और आगे डिग इन करते हैं, अपने से एक और सवाल पूछें कि क्या मैं हर वक्त स्ट्रेस में होता हूं जब मैं काम पे होता हूं? Am I stressed the entire time I'm at work? आप अपने कॉलीग्स के साथ बात करते हैं, उनके साथ दोपहर का खाना खाते हैं, आप का बॉस आपको बुला के शाबाशी देता है, वेल डन, यू डिड अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, योर अप्रेजल इज़ वेरी गुड, वेल डन, यू अचीव्ड योर टारगेट। वो खुशी के मुकाम होते हैं, खुशी का टाइम होता है आपके लिए जब आपका बॉस आपकी तारीफ़ कर रहा होता है, तो फिर आप हर वक्त तो स्ट्रेस नहीं होते। So that means you're not stressed all the time when you're at work. चलिए इसको आगे फर्दर देखते हैं। इसको एक और तरीके से आप इस तरह देख सकते हैं कि am I anxious during the time when I'm having fun or enjoying myself, कि क्या आप उस टाइम पे जब आप कभी मूवी देख रहे हैं, कोई अपनी पसंद का मूवी देख रहे हैं, कोई अपनी पसंद का गाना सुन रहे हैं, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ खाने पे हैं, you're having a fun time, you're enjoying yourself, क्या आप उस टाइम पे भी स्ट्रेस्ड होते हैं? The answer is no, आप उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं होते। तो फिर क्या चीज़ है जो हमें स्ट्रेस दे रही है? हमारे अपने ख्यालात, हमारे अपने थॉट्स हमें स्ट्रेस दे रही हैं। It is these thoughts in our mind that create stress in us. Now, which specific thoughts create stress? That is a big question we need to know now. Now that we've identified that thoughts create stress, then which specific thoughts are creating these stresses in us? उसको भी देख लेते हैं। क्या uncertain thoughts, uncertainty वाले जो thoughts होते हैं, are they creating stress in us? आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं,
और आपको अगले दिन आप एक टाइम आता है आपको वो पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, आप उस बंदे को फ़ोन करते हैं हु ओज़ यू मनी, जिसने आपको पैसे देने हैं, और आप उसको कहते हैं सुबह मुझे पैसों की अशद ज़रूरत पड़ गई है और मेरे वो 50,000 रुपये मुझे दे दो, मुझे तो बड़ी सख्त ज़रूरत है कल सुबह। और वो आपको आगे से कहता है चलो मैं देखता हूँ मैं सुबह दे सकता हूँ कि नहीं। नाउ विल दिस आंसर ऑफ हिज क्रिएट स्ट्रेस इन यू? The answer is yes. Although it's uncertain, he hasn't committed anything. There is uncertainty that he may give the money to you or he may not giving to you, knowing that you need the money tomorrow morning. So there is uncertainty. But there is another way to look at uncertainty as well. Now to look at uncertainty from another angle. You call up a person who owes you money और आपके उसने पैसे देने हैं और वो आपको कहता है, आप उसको यही बात कहते हैं, वो आपको रिप्लाई करता है ठीक है मैं सुबह तुम्हें पैसे दे दूंगा 50,000 रुपया तुम्हारा, लेकिन मैं वो 50,000 रुपया तुम्हें या 5,000 के नोटों में दूंगा या 1,000 रुपये के नोटों में दूंगा। There is uncertainty here as well. Now the uncertainty is कि वो आपको या 5,000 रुपये के नोटों में देगा या 1,000 रुपये के नोटों में देगा। So there is uncertainty. But will you be stressed? The answer is no. So what is the conclusion? Does uncertainty create stress? The answer is no, it does not. So then what creates stress? We know thoughts in our mind create stress. Then which specific thoughts are creating those stress? Uncertain thoughts are not creating stress. So only a thought that creates fear of a bad outcome is possible, creates stress in us. कि कुछ बुरा हो जाएगा, हुआ नहीं है, हो जाएगा, फ्यूचर में होगा। वो फ्यूचर जो भी आपका प्रेजेंट बन जाएगा थोड़ी देर बाद, उसमें आपके साथ कुछ बुरा होगा। So it's a belief, not a reality, but we believe in them. And we start feeling stress. Hence, we need to decide a particular outcome. When we decide a particular outcome about ourselves के मेरे लिए बहुत अच्छा है और बहुत बुरा है, तो फिर हम एक स्ट्रेस में हमारा सिस्टम एक स्ट्रेस में आ जाता है। लाइक अ जॉब इंटरव्यू, मेरा कल सुबह इंटरव्यू है और मैं आज ही अभी उसको बैठ के डिसाइड कर लेता हूँ कि ये तो जॉब इंटरव्यू मेरे लिए बेस्ट है, ये जॉब मेरे लिए लेनी लाजिम है। It is the best job in the world and it's the last job in the world. So I will not be able to reconcile or accept the worst outcome out of it. मैं नहीं पहुंच पाता, मेरा इंटरव्यूअर मुझे नहीं सेलेक्ट करता, I am not qualified for that job. So I will not be ready to accept that outcome. That will start creating stress. So anything I associate with myself as the best or as the worst, bad. It'll be bad if I don't get this job tomorrow. It'll be bad if I don't get an A in my some subject. It'll be bad, Baba, that if I don't get an admission to this university. It'll be bad if I don't get promoted. It'll be bad if I don't get my loan back. So all these bads and all these goods that we associate with something are the cause of this stress in us. So a thought that creates a fear of a bad outcome is the problem that creates stress in us. So today we've understood what creates stress in a human body. Now, the question here to ask is, does every human being feel stressed or anxious or anxiety? The answer is no. Apart from all the human race, only two groups of people or kind of people don't feel stressed. One are those who are not with us anymore, and not in this world anymore. उनके लिए कोई अब worry वाली situation नहीं है, and they're living their eternal life. और दूसरे वो लोग who are mentally impaired, जिनको अपने
एक्शंस के कॉन्सिक्वेंस का नहीं पता होता कि व्हाट कॉन्सिक्वेंस देयर एक्शंस आर गोइंग टू create, and they keep on repeating those actions over and over again because they are not worried about, or they are not concerned with the outcome of their actions or anyone else's actions. ये दो categories stressed नहीं होती. The rest of the entire world, human race, I'm sorry, feel stressed. Anxiety के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो basically it is not an illness. Anxiety, stress, ये illness नहीं है. It's not an illness. It's an emotion. It's an important emotion, and it's an important part of our life. And every emotion has a meaning. Every emotion has a purpose. And it has a very vital part to play in our human experience. So we just should not say that anxiety is an illness. It's not. We only need to know how to handle it. उसको हमें सीखना पड़ेगा. The same way we learn how to handle fear. We learn how to handle crying as an emotion. We learn how to handle being happy as an emotion. So we learn these emotions. Similarly, we need to learn how to handle anxiety as an emotion, and it's a beautiful emotion, and it's not an illness for sure. I would just like to thank you all for giving time to this channel and your precious time to this channel. And one last advice I would like to give you is to take care of your mind and take care of your body, because this is a very special gift we have from the Creator. And try and spread the word of love. Love yourself first and then love others, because this is the most important thing we need at this point in time. I thank you all once again. Pakistan, Zindabad.